Okay, class. So, in this lecture, we will be discussing how to build a business plan. Basically, how to start thinking about a business plan. We will formally study the topic of business plan after 2 or 3 weeks. But this is how an entrepreneur has to think when he has to launch a business in a market. Okay. So, beginning of a business plan, and the example is related to Thomas Edison, who had just invented the light bulb. So, the first question is, what are we trying to accomplish? So, in this case, it's the wiring of America. So, उससे पहले तक, because people were just using candles and kerosene lamps, वायरिंग ही नहीं हुई थी. वायरिंग किस चीज के लिए होती? तो अगर आपने लाइट बल्ब की सेल करनी है तो सबसे पहले वायरिंग होनी चाहिए. What has to be done? So आपने ये पूछना है अपने आप से कि क्या काम होना चाहिए. सो यहाँ जो काम है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है कि जी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो, डिस्ट्रीब्यूट हो उस एरिया में जहाँ पे आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं. एंड देन प्रोटेक्ट द आईपी. आईपी का मतलब यहाँ पे होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो कोई और आपका आइडिया स्टील ना कर ले तो उसके लिए क्या तरीका होता है, पेटेंट रजिस्टर कराना होता है अपने आइडिया का, ताकि कोई और जो है वो आपका आइडिया ना ले ले. Then you think about the market size कि हमने कितने लोगों को cater करना है, so that we know what kind of sales and what kind of investment we need. So यहाँ पे इन्होंने जो टारगेट किया है, for example, 50 million US population total है at that time, which converts to almost 13 million households plus businesses. और ये सिर्फ अमेरिका की बात है और इतना ही ऑलमोस्ट बाहर आउटसाइड ऑफ अमेरिका. देन वी हैव टू थिंक अबाउट द कंपटीशन कि ऑलरेडी मार्केट में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. सो पहले जो है केरोसिन लैंप्स हैं, सो लैंप्स की टाइप के लैंप्स हैं वो चलते थे. व्हाट पीपल विल यू नीड? फिर तो क्वेश्चन है कि किस टाइप की आपको टीम चाहिए. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कितने लोग चाहिए, उनमें स्किल्स क्या होनी चाहिए, कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, किस एरिया में वो काम करेंगे. व्हाट्स योर सेल्स मॉडल? सो आप सेल्स किस तरह से करेंगे, मार्केटिंग के आपकी क्या प्लान होंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मार्केटिंग प्लान्स. ओके जी. देन द टाइम टू रैंप अप. रैंप अप का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट का जो स्केल है वो कितने टाइम में इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे ईयर्स का कम है. ये एक लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान है. How much capital? Of course, again, this is a very important question. Millions of US dollars, but we have to start small. We have to define a particular area जहाँ से start करना है, and then we expand. Okay, then another question that you have to ask yourself is why this is an interesting opportunity. और ये बहुत जरूरी है बिकॉज कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट तभी होगा जब इसके अंदर कोई यूनिकनेस है. सो एक आइडिया के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं. हमारा ये काम है कि हम सबसे पहले एक को चूज करें और एक पे ही फोकस करें. यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू हैव चोजन. उस पर्टिकुलर काम को आपने क्यों चूज किया है और उसी में पहले ग्रो करेंगे. एक बिजनेस को strengthen करेंगे, एक प्रोडक्ट या सर्विस को strengthen करेंगे, and then we go on to the next one when we have stable business in one domain. So यहाँ पे जो options हैं, should you go for transmission business या distribution business या equipment business? So अब एक idea के अंदर बहुत सी opportunities हैं. So you have to decide कि आप किस side पे जाना चाहते हैं. इसमें किसमें आपकी skills ज़्यादा हैं, किसमें market की demand ज़्यादा है, competition कम है, profitability is there. All these factors you have to consider. Must concentrate or act to increase chance of success with limited resources. Of course, when you're starting a new business, हमारे resources हमेशा limited ही होते हैं, and हमें एक चीज के ऊपर सारी अपनी energies focus करनी है, so that our chances of success increase. Okay, what makes us interesting and exciting is the numbers. So numbers के बगैर हमारे जो है वो आइडिया इनकम्प्लीट है. सो नंबर्स के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड दैट एनालिसिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द डिमांड. स्टार्ट्स विद द डिमांड. व्हाट आर द सेल्स ऑफ व्हेल ऑयल, नेचुरल गैस. सो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसकी आप सेल्स देखेंगे
क्योंकि उस बिजनेस को आप क्रिएटिवली डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं और उसकी जगह अपना बिजनेस लेके आ रहे हैं। सो आप देखेंगे कि कितनी सेल होती है, यू डू योर सर्वे। आजकल तो हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, so it's easier for us to get information about a business. Then what are the problems of candles? जो existing products हैं उनकी problems को identify करें, क्योंकि हमने उस problem को target करके और अपनी नई product को advertise करना है। What is the size and shape of the existing market? Existing जो population use कर रही है आपकी product को, उसका size क्या है, उसकी nature क्या है, यानी demographics basically shape का मतलब है age, एरिया, एजुकेशन, जेंडर, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं कि कस्टमर है किस नेचर का। What are the problems with the current way of lighting? Obviously, it's a joke right now अगर हम इसकी बात करें, but we're talking about so many years back. तो उस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग फिनोमेना की, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस की, उसको हमने देखना है और उस पर हमें पिच करनी है। What are the advantages of your system? Then you list down कि आपका जो नया प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके क्या फायदे हैं। Okay, so talking about numbers, we summarize the market. 50 million population थी, 13 million households थे, total sales for natural gas, sales for candles and whale oil, जो भी उसका total बनता है, that is total addressable market। ये मार्केट है जिसको आप टैप कर सकते हैं, जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं, और आपने फिर निकालना है कि आपने कितनी पेनिट्रेशन आपको चाहिए। आप 100% एकदम से मार्केट में पहुंच नहीं सकते। सो यू कैलकुलेट कि अच्छा जी पहले साल में 1889 में हम इतनी मार्केट को 5% मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, देन 90 में हम 10% करेंगे, देन 20% करेंगे। So you have to build a model by making some assumptions, and assumptions should be realistic. Okay. So in this business plan, the entrepreneur has decided that our first market is rich households in New York City within 1 mile of our generating facility. So सबसे पहले टारगेट किया है आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास, अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, रिच हाउस जो लोग इजीली इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, और रेडियस भी डिफाइन कर लिया, एरिया भी डिफाइन कर लिया, सो दैट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए इन द स्टार्ट। So why have you chosen this particular market? We choose a small market because we have limited resources. अभी एकदम से तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिल जाएगी। We want early adopters. So early adopters वही लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम हो, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, बाय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब एक नया आईफोन लॉन्च होता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, सबसे पहले कौन लोग लेते हैं? जिनके पास अफोर्डेबिलिटी हो। You want homes that could afford to wire. Of course, wiring is going to cost a lot, so we can only target the population which has the income to do that. You want homes that could afford your price and which would lend status to your value proposition. So, rich class को early adoption इसीलिए करनी होती है because it gives them the status in the society. You have to tell people if you are doing something new, something that is different, something that is unique, और उनके लिए वो value proposition है कि the kind of money they are going to spend on wiring, उससे उनको status मिलेगा। You want homes that will impress your investors, और investors को भी pitch करने के लिए कि जो हम बताएंगे कि हम इन rich households को target कर रहे हैं, there will be some famous names, तो investors will be more interested in investing a business, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे लोग adopt भी करेंगे, they will be able to pay the price और cash flows की problem नहीं होंगे। Okay, but unfortunately this is what we have worked on, but Edison never created much personal wealth. He was only an inventor, but he was not an entrepreneur.
His works were more impressive than Rockefeller, Ford, Carnegie. These are very famous entrepreneurs. Yet he was now one of the leading financial leaders of his time, although he was the father of General Electric. So idea उसका था बल्ब का, लेकिन कैपिटलाइज किसने किया? The entrepreneurs of General Electric Company. तो यहाँ पे मैसेज यही है कि it's not just about the idea or invention or the technology that you have. We have to build the right business model to have a profitable organization. Okay. Now we're done with the economist view, and now we look at the sociologist view on entrepreneurship. So whenever we set up a business, it has to be related to society and the culture that we live in. So this can read the social and cultural factors responsible for the nature and growth of entrepreneurship development in a society. So आपको अपनी society को भी देख के अपने बिजनेस को लॉन्च करना है. सोसाइटी के हिसाब से आपकी बिजनेस की वैल्यूज, बिजनेस की आइडियाज मैच करते हैं या नहीं करते, और डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट सोसाइटीज या कल्चर जो है वो या तो आपके बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं या उसको इनहिबिट कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं. The traditional social structures, the caste and joint family have been detrimental to the process of entrepreneurial growth. अब कल्चर को अगर मेनली देखा जाए तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम इंडिविजुअलिस्टिक या कलेक्टिव कल्चर्स कहा जाता है. सो जो वेस्ट का कल्चर है उसको इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर कहते हैं, और आपका ईस्ट का जो कल्चर है, जो हमारा है, इज कलेक्टिव कल्चर. सो यहाँ पे पाकिस्तान और हमारे ईस्ट या एशिया के अंदर फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो वन पर्सन अर्न्स एंड द होल फैमिली डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन. लेकिन आपका वेस्ट का जो कल्चर, दैट इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक. हर कोई बंदा अपना अर्न करना चाहता है, एंड दैट इज व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल है, वहाँ पे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि everyone has to earn from themselves, everyone has to live their own life. तो आपकी फैमिली आपको inhibit नहीं कर रही है in your growth. Modern democratic system is more conducive to development of innovative behavior. अब अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें भी इनोवेशन ज्यादा है, क्रिएटिविटी ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है, as compared to जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट के लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये गवर्नमेंट सारी चीज़ों को ओन करती है, सारे बिजनेसेस को, वहाँ पे फिर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं ज़्यादा होगी. सो हिस्ट्री में अगर देखें तो द सैमुराई कम्युनिटी रोज टू एंटरप्रेन्योरशिप ड्यूरिंग द मीजी regime in Pakistan, in Japan, sorry. Indian entrepreneurship from the very beginning has been dominated by three communities: Parsis, Gujaratis and the Marwaris. So कुछ खास communities हैं जो कि ज़्यादा entrepreneurship में successful हुई हैं. And also sometimes religion has an impact on entrepreneurship. Max Weber analyzed religion and its impact on economic organization of the society. So religious beliefs are the main force for generating entrepreneurial activity. Entrepreneurial growth depends on the ethical values of society. इसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इसमें दो अलग अलग व्यूज हैं. एक बहुत ओपन है जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं, एक कंजर्वेटिव है, कैथोलिक है, जो कि थोड़ा सा नैरो माइंडेड है. सो कैथोलिक जो है वो कहता है कि बिजनेस जो है और कैपिटलिज्म जो है वो आपको रिलीजन से दूर करता है, जबकि प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि दुनिया में सक्सेस जो है और कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो आपको रिलीजन के करीब करता है. सो दैट इज योर एक्चुअल पर्पस इन लाइफ. सो रिलीजियस व्यूज भी जो है वो इस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसके अंदर भी जो है बिजनेस को बहुत
प्रेफर किया गया है, एंड सो मेनी